Good morning, everyone. Mock test number 6 आज हम डिस्कस करबा जाउछे डिस्कशन क्लास पूर्वरु एज यूजुअल मते टिके जणे दियंतु लाइव चैट रे कि ऑडियो आउ स्क्रीन रे पीडीएफ टा क्लियर अछि कि नाही ऑडियो वीडियो दीटा क्लियर अछि कि नाही एनी वन ऑफ यू जो माने भी लाइव अछंती तांको भितरु जणे केही भी जणे देले चलिबो ओके ठीक अछि with आजिर सेशन डिस्कशन सेशन रे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमर 50 टा अछि वन बाय वन हमें देखिबा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम क्वेश्चन नंबर 1 10 सेकंड्स देबी मु ईच क्वेश्चन समस्त को जଣା थिबो जो माने लाइव क्लास अटेंड करछन डिस्कशन रो ईच क्वेश्चन मु 10 to 15 सेकंड्स देबी डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन फैक्चुअल जदी प्योरली फैक्चुअल किसी क्वेश्चन थिबो ताहले आमे बस खाली आंसर टा टिक करी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जिबा क्वेश्चन नंबर 1 under the constitution of india which article empowers the parliament to regulate citizenship very easy question 10 seconds दोची मु आ पई तो एक्चुअली 5 seconds दबा कथा but still I'm giving 10 seconds ओके एबे हमें आंसर देखिबा आंसर बा डी आर्टिकल 11 रे कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ए पार्लियामेंट को पावर मिली कि से सिटीजनशिप को रेगुलेट करि परिबो एक्चुअली आर्टिकल्स मन रहबे बहुत इंपोर्टेंट एक्चुअली प्रीलिम्स भाई आर्टिकल 11 मु देखु छी बहुत लोग सी बहुत स्टूडेंट्स एटी सी कहउछंदी सी हबनी
I will discuss article 10 रे कौन अच्छी article 11 first of all ये parliament को हमें एठी जानिले गोटे authority provide करूची कि से citizenship ऊपर laws बनै परिबो कि citizen केमिति जने acquire करि परिबो केमिति तार citizen terminate हे परिबो citizenship and जे कोनोसी related matter रे सेति में parliament कोन enact करची citizenship act 1955 option number 1 article 5 रे कोन article 5 होची definition of what definition of citizenship definition of citizens की commencement जेतेबेले constitution हमर commence हला सेई टाइम रे जो citizen मानकर कोन definition सेटा article 5 रे include हेची article 7 कोन article 7 सेई लोक मानक संगे deal करे जो माने who migrated to Pakistan and returned जो माने पाकिस्तान को माइग्रेट हेकी जाइतिले तापरे पुणी रिटर्न करिसंदी इंडिया को आर्टिकल 7 सेठी डील करे एबे आर्टिकल 10 जो माने आर्टिकल 10 आंसर दउतले सेटा कोन कि से एन्श्योर करे कि सिटीजनशिप गोटे लोकर सिटीजनशिप केमिति कंटिन्यू हबो इट एन्श्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप डू नॉट गिव पावर टू पार्लियामेंट राइट सो आर्टिकल 11 होची पार्लियामेंट रो पावर टू मेक सिटीजनशिप लॉज Now read question number 2. Who among the following were covered under the Article 6 of the Constitution at the commencement? Migrants from Pakistan after July 19, 1949, migrants from Pakistan before July 19, 1949, Indian origin persons residing abroad, refugees from Tibet. The 10 seconds starts now. Correct answer was migrants from Pakistan before July 19, 1949. आर्टिकल 6 कहूँ कि जो लोक मैंने माइग्रेट होकर आसी पाकिस्तान रु इंडिया को ड्यूरिंग व्हाट ड्यूरिंग पार्टीशन बिफोर दिस डेट जुलाई 19, 1949 सेटा इंक्लूड होची एंड सेमानकु इंडियन सिटीजन हिसाब रे कंसीडर करा जाई थांते जदी सेमाने पर्टिकुलर डेट रो पूर्वरु आसी थांते एंड जदी सेमानकर पेरेंट्स बा ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया रे बॉर्न ही थांते माइग्रेंट्स फ्रॉम एबे अदर ऑप्शन देखियो माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर जुलाई 19, 1949 एटा कोन एटा कवर हेची कोथरे आर्टिकल 7 रे not article 6 एटा होचे article 7 then Indians living abroad एटा ए article under रे cover हेनी Indian origin persons then Tibetan refugees it came much later not part of the constitution commencement provision okay तो answer कोन हबो answer सी कहबो article 6 migrants from Pakistan before 19 July 1949. Now read question number 3. Which of the following correctly describes Indian citizenship model? Dual citizenship with federal structure, single citizenship for entire union, provincial citizenship with central oversight, consular citizenship provided only during the emergencies. आंसर इज बी सिंगल सिटीजनशिप एटा बहुत इजी क्वेश्चन थला समस्त जानथिबे हमर सिंगल सिटीजनशिप फॉर एंटायर यूनियन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप एक्चुअली फॉलो करे माने होची एवरी पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली एवरी पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली किंतु अदर कंट्रीज रे जेमती यूएस रे हमें देखिया को पाई थाउ कि सेटी डुअल सिटीजनशिप चले ओके
डुअल सिटीजनशिप सेटा आमे देखिले फर्स्ट डुअल सिटीजनशिप हबनी सेटा यूएस भलिया कंट्रीज रे सेटा रहिछि प्रोविजन देन प्रोविंशियल सिटीजनशिप कोन एटा दिस इज नो स्टेट वाइज सिटीजनशिप इन इंडिया स्टेट वाइज सिटीजनशिप हमर एठी किछि प्रोवाइड होनी कंस्युलर सिटीजनशिप नो सच कॉन्सेप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी रॉन्ग Fourth question. Under the Citizenship Act 1955, which of the following is not a mode of acquiring citizenship? Birth, descent, marriage, naturalization. Correct answer ba marriage. Kaina समस्त लक्ष्मीकांत रे पढ़िथिबे birth, descent, naturalization रे citizenship acquire करि हबो किंतु marriage is not a mode of acquiring citizenship. Kaina India does not give automatic citizenship by marriage. India automatic citizenship से provide करूनी due to marriage. गोटे फॉरेन स्पाउस ताकू भी रेजिस्ट्रेशन करने को पड़िबो सिटीजनशिप एक्वायर करबा पई की रेसिडेंसी पीरियड अच्छी एंड आहुरी भी बाकी कंडीशंस अच्छी ताकू सब फुलफिल करबा पई की पड़िबो अप्लाई करिया पड़िबो रेजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो खाली मैरिज हे गले सिटीजनशिप मिल जिवनी मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर द एक्ट कोन रहला फर्स्ट हमें देखले बर्थ हे परिबो डिसेंट हे परिबो नेचुरलाइजेशन हे परिबो आउ कोन कोन हे परिबो बाय रेजिस्ट्रेशन आउ गोटे कौन हो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा Which amendment introduced the legal definition of illegal migrant and linked citizenship with the NRC? Giving 10 seconds. Answer about 2003 amendment. Citizenship Act को amend करा जाइतला 2003 रे and it introduced the legal definition of the illegal migrant. Okay, illegal migrant कौन? Entered without valid documents or overstayed. ताकू कुआ जाए illegal migrants. Created the concept of NRC. Question रे already provide है citizenship by birth को आउरी strict कर दिया गला by birth condition हिसाब रे एबे जेकोनोसी गोटिए पेरेंट को एटलीस्ट ही और शी मस्ट बी इंडियन प्लस आउ जो बाकी जनक रहिले अदर मस्ट नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट इंडियन एंड सेकेंड पेरेंट जीए नॉट एन इलीगल माइग्रेंट 2003 अमेंडमेंट रे एटा हैला सो आमे कोन जान लेडी 2003 अमेंडमेंट रे इलीगल माइग्रेंट रो डेफिनेशन प्रोवाइड हैला आ एनआरसी भी अछि देन स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ under CAA 2019 the reduced residency requirement for the notified communities is 2 years 3 years 5 years and 7 years
आंसर इज एक्चुअली 5 years. नॉर्मली फॉर न्याचुरालाइजेशन गोटे फॉरेनर इंडिया रे ताकू रहिबा दरकार फॉर 11 आउट ऑफ प्रीवियस 14 years. फॉरेनर न्याचुरालाइजेशन पाई की फॉर न्याचुरालाइजेशन इंडिया रे ताकू 11 years रहिबा दरकार आउट ऑफ 14 years. ठीक अछि एंड कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 12 months. एटा होची कंडीशन. गोटे सेकंड. Continuously for the last 12 months. CAA 2019 ये reduce कर देइछि ये requirement को to 5 years for the 6 minority communities from 3 countries. Yes, जो माने C रो 6 आंसर दोचंदी very good. राजेश दास, then Dipanjali Sinha, Sridhar, Karakesh. Yes, option number C. The CA 2019 applies to persecuted minorities from which of the following countries? Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, or Myanmar, Sri Lanka, Nepal. 10 seconds doji. 10 seconds starts now. आंसर इज सी अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. एटा मन रखिबे जो एक्टा रहिला एटा 6टा रिलीजियस माइनॉरिटीज को कवर करूची. हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज प्लस क्रिश्चियन. ठीक है, ठीक अच्छी. फ्रॉम 3 इस्लामिक मेजोरिटी नेबर्स. अफगानिस्तान आउ 3टा इस्लामिक मेजोरिटी नेबर्स हेले एठी हमर अफगानिस्तान, बांग्लादेश आउ पाकिस्तान. श्रीलंका एठी इंक्लूड कराहेनी. भूटान, नेपाल भी इंक्लूड कराहेनी. म्यांमार आउ श्रीलंका भी एठी इंक्लूड कराहेनी. तो सीए कंट्रीज कोन रहले? अफगानिस्तान, बांग्लादेश आउ पाकिस्तान. 8th question. OCI card holders in India are prohibited from owning property, traveling without visa, voting in elections, investing in Indian companies. Give me the answer. Yes, जो मैंने 7 सी दोचंदी आयुष, उमाकांत, दीपांजलि. वेरी गुड. से माने इलेक्शन रे एक्चुअली वोट करि परिबेनी. जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हमर रहिले से मानकू एक्चुअली जो बेनिफिट मिले, बेनिफिट्स रे तांकर इंक्लूड होचे लाइफ लॉन्ग वीजा, देन से माने प्रॉपर्टीज बाय करि परिबे. दे कैन बाय प्रॉपर्टी. किंतु प्रॉपर्टीज से माने परचेस करि परिबे with an exception except agricultural land can work, study and also invest. किंतु से माने कौन करि परिबेनी? What they cannot do? They cannot vote, they cannot contest in elections and they cannot hold constitutional or government posts.
Ninth question, the 1986 amendment to the Citizenship Act primarily restricted citizenship by naturalization, birth, descent, incorporation of territory. आंसर हम बर्थ 1986 पूर्वर कौन होता कि जी भी इंडिया रे तांकर जदि बर्थ हेतिबो एनीवन बोर्न इन इंडिया तांको सिटीजनशिप मिल जाउतला किंतु आफ्टर 1986 कौन हैला कि जदि गोटे चाइल्ड इफ ही और शी वाज बोर्न इन इंडिया ताकू सिटीजनशिप सेतबळे मिलिबो जदि एटलीस्ट one parent is an Indian citizen. आउ एटा गोटे प्रथम मेजर रेस्ट्रिक्शन थिला ऑन सिटीजनशिप बाय बर्थ naturalization उपरे restriction आसिला introduced in 2003 not 1986 and descent सेटा amendment द्वारा किछि भी तादरे changes हेनी incorporation of territory this is unrelated so answer कोन हबो answer हबो birth 1986 amendment रे कोन हैला it tightened the citizenship by birth. Which article prohibits dual citizenship in India? Article 7, 9, 10 or 11? को आर्टिकल डुअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करूची आंसर हम आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 एटा से स्टेट करे कि गोटे पर्सन वॉलंटरीली सिटीजनशिप acquire करिवो जदि गोटे फॉरेन स्टेट रो ताहले he or she will cease to be an Indian citizen. If a person voluntarily acquires citizenship of a foreign state they cease to be an Indian citizen. ठीक अछि आउ एटा गोटे लीगल बेसिस प्रोवाइड करूची फॉर नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया no dual citizenship in India. आर्टिकल 7 होची माइग्रेंट्स टू और फ्रॉम पाकिस्तान जस्ट हमें ऊपर डिस्कस करछे आर्टिकल 10 हैला कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप केमती जनकर सिटीजनशिप कंटिन्यू होबो सेही प्रोविजंस आर्टिकल 10 रे लिस्टेड अछि एंड आर्टिकल 11 होची पार्लियामेंट रो पावर टू मेक सिटीजनशिप लॉज सो आर्टिकल 9 इट प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप. Under the CAA rules to 2024, migrants fulfilling notified conditions will be automatically naturalized, not be treated as illegal migrants, receive temporary residence permits, lose OCI status. आंसर कौन हम आंसर हम बी नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स सीए 2019 प्लस रूल्स 2024 जो माइग्रेंट्स हमर आसुचंती अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान रु एंड जीए इंडिया को एंटर करिथिबे बिफोर 31st डिसेंबर 2014 एंड जदि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज रु थिबे
ठीक अच्छी से इलीगल माइग्रेंट कुहाजीबनी दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स इवन इफ दे एंटर्ड विदाउट पेपर्स और ओवरस्टेड अलाउड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ओके तो आंसर कौन हम नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स ऑटोमेटिकली नेचुरलाइज्ड ऑप्शन जो अच्छी सेटा नो दे स्टिल मस्ट अप्लाई तो ये ऑप्शन टा हबने टेम्पररी रेसिडेंस परमिट से कौन लिखा है कि नॉट मेंशन्ड इन द सीएए रूल्स एटा किसी मेंशन नहीं लूज द ओसीआई स्टेटस दिस इज नॉट रिलेटेड Which of the following statements is correct regarding Canada's 2025 citizenship reform? It restricts citizenship for foreign born children. It abolishes overseas voting rights. It eases citizenship for Indian origin families. It ends the dual citizenship. आंसर अब सी इट इज ए सिटीजनशिप फॉर इंडियन ओरिजिन फैमिलीज कैनाडार जो 2025 रिफॉर्म्स रहा से सिटीजनशिप को आहुरी इजी कर देछि सिटीजनशिप नॉर्म्स को फॉर इंडियन ओरिजिन फैमिलीज स्पेशली जो माने कि address करूछंदी restrictive provisions affecting second generation children born abroad. कैनाडा रे कौन कैनाडा रिकॉग्नाइज करे कोटा डुअल सिटीजनशिप को आउ तार गोटे बहुत बड़ इंडियन डायस्पोरा भी से कैटर करे नियरली 1.6 मिलियन पाखापाखि एंड ए जो रिफॉर्मटा आसिला एटा स्ट्रेंथन करूची इंडिया और कैनाडा रो जो ह्यूमन मोबिलिटी लिंकेजेस अछि डिस्पाइट द डिप्लोमेटिक टेंशंस इंडिया कैनाडा linkages. 13th, India's OCI scheme was restructured in 2015 by merging NRI and the OCI schemes, merging PIO and the OCI schemes, creating overseas diaspora fund, introducing dual citizenship. आंसर अब बी मर्जिंग पीआईओ एंड द ओसीआई स्कीम्स 2015 अमेंडमेंट से कौन गला पीआईओ रो फुल फॉर्म होची पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम्स को मर्ज करागला कौन पाई कि जो डुप्लिकेशन बा जो स्ट्रीमलाइनिंग रो जो प्रॉब्लम्स रहउची ताकू केमिति रिमूव करा जिवो फॉर डायस्पोरा पॉलिसी पीआईओ कार्ड होल्डर्स से माने ऑटोमेटिकली डीम्ड दे आर ऑटोमेटिकली डीम्ड ओसीआई कार्ड होल्डर्स
आउ एबे आफ्टर अमेंडमेंट ओसीआई सर्विसेस रे एबे इंक्लूड करा जाउची लाइफ लॉन्ग वीजा एग्जाम्पशन फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग एंड पार्टी पैरिटी विद द एनआरआईज इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फील्ड्स आउ ए जो रिफॉर्म टा आसला एटा इंडिया रो जो ब्रॉडर डायस्पोरा एंगेजमेंट स्ट्रेटजी अछि तार पार्ट. The Assam NRC process was conducted under the supervision of Parliament, President's Office, Supreme Court of India, Ministry of Home Affairs. 10 seconds starts now. Answer about Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुपरविजन अंडर है जो प्रोसेस टा कि जो एनआरसी जो अपडेट हम प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द एनआरसी इन आसाम वाज मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्दो जो एनआरसी रो जो लॉजिक अच्छी इट यूजेस द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्पेशली सेक्शन ए 6A फॉर आसाम. Supreme Court of India court played the role of oversight to ensure the legality and fairness of the process. ठीक है. A person who voluntarily acquires the citizenship of a foreign state loses Indian citizenship under which provision? Renunciation, termination, deprivation, derecognition. जस्ट ऊपर गोटे क्वेश्चन रे एटा ऑलरेडी डिस्कस ही सरची सो एते टाइम लगिवा कथा नुहे. आंसर अब बी टर्मिनेशन. सेक्शन 9 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट स्टेट करे कि जो इंडियन सिटीजनशिप रहिला सेटा टर्मिनेट हे जिवो गोटे लोकर जदि से आउ गोटे को फॉरेन कंट्रीज रो सिटीजनशिप एक्वायर करूची. सो द टर्मिनेशन इज ऑटोमेटिक हियर. जेमती से एक्वायर करिवो जो टाइम रे से टाइम रे एपटू टर्मिनेट हे जिवो. नो फॉर्मल डिक्लेरेशन इज नीडेड. ओके ऑटोमेटिक. रेनंसिएशन एटा कोथरे अछि सेक्शन 8 रे अछि. एटा होची वॉलंटरी. देन डेप्रिवेशन मेंशन हे सेक्शन 10 रे जोटा कि प्यूनिटिव. टर्मिनेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप. Then आमर आसला कि India remains one of the strictest countries globally in rejecting the dual citizenship. Which of the following is secular inclusive principle embedded in the citizenship provisions at the commencement? Religious based citizenship categories, equal rights irrespective of religion, racial qualification of domicile, exclusive preference for Indian immigrants abroad. Yes, 15 रो जो माने बी आंसर देइछंती. वेरी गुड. श्रीधर, दीपांजलि. आंसर अब आर बी बी इक्वल राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. कमेंस हेतला जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप प्रोविजन्स इंडिया रो जो सिटीजनशिप थिला इट वाज नॉट ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बेसिस रे एटा ग्रांट हेइ नतला. रादर ये गोटे न्यूट्रल लीगल क्राइटेरिया फॉलो करितला. न्यूट्रल लीगल क्राइटेरिया जेमती हमर बर्थ हे गला डोमिसाइल वा माइग्रेशन जोटा एनश्योर करूथला कि इक्वल सिटीजनशिप राइट समस्त को प्रोवाइड करा जिवो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड एटा रिफ्लेक्ट करूची सेक्युलर और इंक्लूसिव स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कोन बा आंसर बी.
According to November 2025 OECD data, India's immigration trend is highlighted by lowest outflow among middle income nations, highest number of citizens acquiring citizenship abroad, decline in overseas migration patterns, restriction on mobility due to domestic laws. Answer about B. OECD data এটা show କରୁଛି କି India leading globally in number of citizens acquiring foreign citizenship around এটা କେତେ ହେଇଛି around 2.25 lakh Indians ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି they obtained citizenship abroad in 2023 ଏଇଟା reflect କରୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର large diaspora and high skilled migration patterns କୁ major destination ସେ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି US ହେଇଗଲା କାନାଡା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁକେ and এটা আহুরি ক্রিয়েট করছে যে ইন্ডিয়ার স্ট্রিক্ট নো ডুয়াল সিটিজেনশিপ পলিসি রহিলা কাইনা গোটে জায়গার গোটে ফরেন कंट्रीर सिटीजनशिप एक्वायर कला बेलू एठी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होची रिक्वायरिंग रेनंसिएशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप सो आंसर अब बी हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीजन्स एक्वायरिंग सिटीजनशिप अब्रोड Read question number 18. Assertion India does not permit dual citizenship for its citizens. Reason है the Constitution under Article 9 prohibits individuals who voluntarily acquire foreign citizenship from retaining Indian citizenship. Now, ये जो option गुड़ा पढ़ी की within 15 seconds answer accordingly in the live chat. सेवेन्टीन बी जो मैंने आंसर दी वेरी गुड करेक्ट आंसर नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 रा आंसर हम ए दीटा जाक ठीक अच्छी आउ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर्टिकल 9 एक्चुअली में ऊपर भी डिस्कस कर सारे इट बार्स डुअल सिटीजनशिप dual citizenship by stating that voluntary acquisition of foreign citizenship lead to loss of Indian citizenship आउ ये जो termination बा loss टा थाए सेटा होची automatic किछि document fill up करिया को पड़िबनी assertion correct अछि काहे कि इंडिया constitutionally dual citizenship को prohibit करूची एटा समस्त जानिथिबे reason correct अछि काहे कि assertion since article 9 is the basis of prohibition बहुत countries से माने dual citizenship allow करंती India permits only OCI as a partial alternative match the list 1 with list 2 list 1 रे listed है provisions and amendments article 8 2003 amendment 2019 amendment and 1986 अच्छी list 2 रे तारा description अच्छी illegal migrant definition then B रे अच्छी citizenship for persons of Indian origin abroad restricted citizenship by birth provided fast track citizenship to specific minorities अभी तो कोड़ा ठीक होगा giving 10 seconds no actually 15 seconds matching achi and tige factual achi so answer of a B
1 ର B, 2 ର A, 3 ର D and 4 ର C. Article 8 से कोथरे डील करे? It deals with the citizenship of persons of Indian origin. Person of Indian origin residing outside India, mainly जो diaspora community तांको cover करे. Then 2003 amendment रे कौन इतला? Illegal migrant हमरो definition मिलथिला तांको and linked NRC to citizenship. CAA 2019 amendment रे कौन हैला? Fast track citizenship for persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. And 1986 amendment रे restricted citizenship by birth. ये सब ऑप्शन ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस रे डिस्कस हेजी भल से. सो आमर कोन आंसर हबो बी. Question number 20. In Jain philosophy, karma is described as a psychological impression on the mind, an ethical tendency developed through rebirth, a material substance binding to the soul, or divine punishment. Answer of C, a material substance binding to the soul. Jainism unique, it's very unique among the Indian philosophical system kahingi na se karma ku gote real material au subtle fine particulate substance hisab re view kare dekhe that physically attaches to jiva जोटा को सोल कहउछदी. ए जो कार्मिक पार्टिकल्स रहला से माने बाइंड कोथ पे होती, दे बाइंड ड्यू टू पैशंस लाइक जेमती की पैशन हमर जेमती एंगर, ईगो, डिसीट, ग्रीड. ओके, कर्माटा जैनिज्म रे मेटाफोरिकल नुह, अनलाइक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जोटी कर्मा को गोटे मोरल एक्शन हिसाब रे निया जाए आ गोटे कॉन्सिक्वेंस हिसाब रे निया जाए. कर्मा इन जैन फिलोसफी इज नॉट मेटाफोरिकल. लिबरेशन बा मोक्ष जोटा कुहा जाए सेटा अचीव हुए जेतेबेले निजर कार्मिक मैटर इज फुल्ली शेड थ्रू राइट कंडक्ट एंड स्ट्रिक्ट एसेटिज्म. लिबरेशन. जैन यूनिवर्स इटर्नल जोठी की केही भी क्रिएटर नहांती, नो क्रिएटर गॉड. कर्मा सी साइकिल ऑफ रीबर्थ को गवर्न करे विथ स्ट्रिक्ट नेचुरल लॉज. नो क्रिएटर or God. Which of the following best represents the Jain three Ratna? Right conduct, right truth, right abstinence, right knowledge, right conduct, right mindfulness, right faith, right knowledge, right conduct, right faith, right speech, right livelihood. Answer of C. राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. जैन त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स जहाँ को भी कहा जाए. इट कंसिस्ट ऑफ द सम्यक दर्शन. राइट फेथ ताको कौन कहती? सम्यक दर्शन. देन सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज. सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र होची राइट कंडक्ट. एंड ए जोटा रहिला थ्री ज्वेल्स दे फॉर्म द कोर पाथ टू लिबरेशन. एथिरे कोन हबो गोटे मनीष लिबरेट हबो आको फॉलो करे. These are the core path to liberation and were systemized by the Mahavira. 22nd.
In Buddhism, the middle path was intended to avoid the extremes of sacrifice and non-violence, ritualism and agriculture, hedonism and asceticism, meditation and learning. आंसर हम सी हेडोनिज्म एंड एसेटिज्म बुद्ध एटा डिस्कवर कले कि जो मिडल पाथ हमर रही मिडल पाथ जहाँ को कहा जाए मझिमा पतिपद जितेबाला एक्सट्रीम इंडलजेंस को जने रिजेक्ट करे ऑफ रॉयल लाइफ हो कि एक्सट्रीम सेल्फ मोटिफिकेशन हो प्रैक्टिस्ड बाय एसेटिक्स मिडल पाथ एम्फासाइज करे मॉडरेशन एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन आउ विजडम उपरे ठीक अछि एटा गोटे बेसिस फॉर्म करूची 8 फोल्ड पाथ जोटा रहिला द प्रैक्टिकल रूट टू एंड सफरिंग हिस्टोरिकली कौन ये जो अप्रोच टा जोटा कि बुद्धिज्म मेड बाय बुद्धिज्म मोर एक्सेसिबल टू द मासेस कंपेयर टू द डिफिकल्ट एस्थेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ जैनिज्म तो आमर आंसर कौन बो सी हेडोनिज्म एंड एस्थेटिज्म Which doctrine of Buddhism denies the existence of the permanent self? Dukha, Anika, Anatta, Pratitya, Samutpada. Answer is C. Anatta. Anatta माने कौन नो सेल्फ आउ एटा तीनटी यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बुद्धिज्म रो रही एटा ता भितर गोटे बाकी दुईटा होची अनिक जहाँ माने होची इम्परमानेंस दुख जहाँ माने होची ऑब्वियसली सफरिंग समस्ते जानिथिबे इट डिनाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल अनचेंजिंग सोल जहाँ को आत्मन कहउचंदी गोटे की डिपैचर एटा प्रोवाइड करूची फ्रॉम वैदिक फिलोसॉफी एंड जैनिज्म बुद्धिज्म हिसाब रे जो लोक माने रहले बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स से माने कोथरे कंपोज्ड दे आर कंपोज्ड ऑफ द इम्परमानेंट स्कंधस एग्रीगेट्स विथ नो परमानेंट एसेंस स्कंधस with no permanent essence and जो डॉक्ट्रिन टा रहला एटा बहुत एसेंशियल केमिति रीबर्थ सफरिंग आउ लिबरेशन को जणे अंडरस्टैंड करिवो In Buddhism, the 5 aggregates or skandhas are central to understanding rebirth only, material creation of universe, absence of soul, moral codes of Sangha. Giving you 10 seconds, 10 seconds starts now. Answer of C, absence of soul. जो स्कंधस रहला 5 एग्रीगेट्स जो पांचटी एग्रीगेट कौन फॉर्म फीलिंग परसेप्शन mental formation consciousness these constitute the idea of a person and एटा से माने प्रूव करंती कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग रहला ऑफ अनत्त since no permanent entity exists beyond these changing components
Which Tirthankara is considered historically verifiable in Jain tradition? Adinatha, Rishabhanatha, Parshvanatha, Mahavira. Answer about D. Mahavira. जो 24टा तीर्थंकारस रहिले महावीर सी थिले 24th आउ एटा हिस्टोरिकली वेरीफाएबल बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट जैन और ग्रीक अकाउंट्स पार्श्वनाथ से 23rd थिले सेमी हिस्टोरिकल थिले व्हाइल माने जो आगुरु तांको आगुरु जो तीर्थंकरस थिले दे आर लार्जली कंसिडर्ड माइथो हिस्टोरिक आंको पूर्वरु 23rd किए थिले पार्श्वनाथ हिस्टोरिकल वेरीफाएबल ओनली होचंदी हमरो महावीर महावीर से 6th century BCE lived and contemporized existing ascetic traditions. Which sect of Jainism believes women cannot attain liberation directly? Theravada, Svetambara, Digambara, Mahayana. आंसर अब सी दिगंबर दिगंबर सेक्ट जो थिला सी गोटे स्ट्रिक्टर एसेटिज्म फॉलो करुथिले एसेटिसिज्म फॉलो करुथिले इंक्लूडिंग न्यूडिटी ऑफ द मॉन्क सिंबॉलिक फॉर एनंसिएशन दिगंबर से माने एटा तांकर बिलीफ थिला कि वुमेन से माने डायरेक्टली लिबरेशन से माने अटेंड करि परिबेनी काहे कि ना से माने कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस करंतिनी एंड एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज जो दे मस्ट बी रिबॉर्न एज मेन जदि लिबरेशन अटेन करिवार अछि दे मस्ट बी रिबॉर्न एज मेन इन कॉन्ट्रास्ट जो श्वेतांबर थिले सेमाने वुमेन मानको अलाउ करुथिले एज नन्स एंड एक्सेप्ट देयर कैपेबिलिटी फॉर लिबरेशन बुझिएला आउ ए जो डॉक्ट्रिनल स्प्लिट थिला ए दिटा भितरे इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट schism of Jainism. The Buddhist Sangha was revolutionary because it allowed animal sacrifice for feeding monks, admitted individuals irrespective of caste, rejected monastic life for households, was restricted only to Brahmins. आंसर अब बी एडमिटेड इंडिविजुअल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट बुद्धिस्ट संघ बा मोनास्टिक कम्युनिटी जो थिला सी इंडिविजुअल मानको एक्सेप्ट करथिले सबु वर्ण सबु कास्ट टू इंक्लूडिंग शूद्र हे गले मार्जिनलाइज ग्रुप हे गले एटा एक्चुअली गोटे रेवोल्यूशनरी थिला और कास्ट जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी चली रही छी ऑफ 6th century BC इंडिया रे ठीक अछि जो संघ थिला दे ऑफर्ड इक्वल स्टेटस shared living,
democratic decision making through the Vinaya Pitaka. Women ମାନଙ୍କୁ ବି admit କରାଯାଉଥିଲା, they too were admitted, though with additional rules, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି additional rule ଥିଲା. Answer ଆମର କ'ଣ ହବ? Admitted individuals irrespective of caste. In Jainism, which of the following is not one of the 5 great vows? Mahavratas. अपरिग्रह, सत्य, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य. आंसर हम सी प्राणायाम, जो 5टी ग्रेट वाउस थिला महाव्रतस इन जैनिज्म. फर्स्ट होची अहिंसा, सेकेंड इज सत्य, थर्ड इज अस्तेय, एक्सक्यूज मी, फोर्थ इज ब्रह्मचर्य, देन फिफ्थ होची अपरिग्रह. एंड एगुड़िका मैंडेटोरी थिला मंक मानक पई, हाउस होल्डर्स मानक पई, जो माने सिमिलर वर्जन्स फॉलो करूचंदी, कॉल्ड अनुव्रतस. तांको कोन कुआ जाउतला? हाउस होल्डर्स माने तांको अनुव्रतस कुआ जाउतला. प्राणायाम होची एक्चुअली ब्रेथ कंट्रोल. एटा गोटे योगिक प्रैक्टिस, नॉट अ जैन वाव. दिस इज अ योगिक प्रैक्टिस. The Bodhisattva ideal is a defining characteristic of which Buddhist tradition? Theravada, then Mahayana, Vajrayana, Abhidhamma. ट्वेंटी नाइन रहा बी महायान. बोधिसत्व आइडियल एटा सेंट्रल होची कोठी? महायान बुद्धिज्म रो. महायान सेंट्रल टू महायान बुद्धिज्म. जो प्रैक्टिशनर्स रही से माने पोस्टपोन करती तांकर पर्सनल निर्वाण टू हेल्प अदर्स टू अचीव द लिबरेशन. ओके. एंड फेमस बोधिसत्वस जेमती कि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री. एंड ये जो आइडियलटा रहिला, इट इज डिफरेंट फ्रॉम थेरावाड़ा, जे कि जहार एम्फासाइज थाए अर्हतशिप उपरे. माने इंडिविजुअल लिबरेशन. Chandragupta Maurya is associated with which religious tradition in his later life? Ajivika, Buddhism, Shaivism, Jainism. आंसर हम डी जैनिज्म. थ्रोन रो एब्डिकेशन परे से जैनिज्म को एम्ब्रेस करथिले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुम? आचार्य भद्रबाहु. सीए माइग्रेट करथिले टू श्रावण बेलगोला कर्नाटक को, एंड से सेठी सीवियर एसेटिसिज्म प्रैक्टिस करथिले, इवेंचुअली अंडरटेकिंग द सालेखाना रिचुअल फास्टिंग अनटू डेथ. माइग्रेटेड टू वेयर? एंड सेठी से कौन प्रैक्टिस करथिले?
सल्लेखाना जोटा कहते रिचुअल फास्टिंग ऑन टू डेथ तांकर जो ग्रैंडसन थिले अशोक सी अडॉप्ट करदेले बुद्धिज्म को जोटा कि हाईलाइट करूची डाइवर्स ऑफ रिलीजियस पैट्रोनेज इन द मौर्यन एम्पायर हमर एटी कोन हबो सॉरी जैनिज्म Parshvanatha is associated with how many vows for ascetics prior to Mahavira's elaboration? 2, 3, 4 or 5? पार्श्वनाथ जी की 23rd तीर्थंकर थिले मु ऊपर गोटे क्वेश्चन डिस्कस करची से चारोटी वाव चतुर्यम धाम से टीच करथिले सो आंसर हबो 4 कौन कौन थिला अहिंसा देन सत्य आस्तेय एंड अपरिग्रह महावीर तापरे 5th वाव ऐड करथिले जोड़ा थिला ब्रह्मचर्य The doctrine of pratitya samutpada dependent origination explains the ritual obligations of householders, the causal chain of suffering, the causal chain of suffering, excuse me, the rules of monastic behavior, the geographic spread of the sangha. Answer is B, causal pain of suffering. एटा एक्सप्लेन करे जिते भी फेनोमेना जोटा कि अराइज होची ड्यू टू कॉज आउ कंडीशन सेंट्रल फार्मूला आरो कोन इमास्मिन सति इदम होती where this exists that comes to be 33 Extreme ascetic practices such as nudity and prolonged fasting are more typical of Mahayana monks, Digambara Jain monks, Theravada bhikkhus, Vajrayana practitioners. The 10 seconds starts now. Answer of B, Digambara Jain monks. ସେମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟେରିଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ନ୍ୟୁଡିଟି ଲଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟିଂ ମିନିମାଲ ପଜେସନ୍ ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନନ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେନନ୍ସିଏସନ୍ ରହିଛି ଏଟା ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ କାର୍ମିକ୍ ମ୍ୟାଟର ସେମାନେ ଶ୍ୱେତାମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋବ୍ସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଜୈନ ଆସେଟିସିଜମ୍ ଏଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଜଣାଯାଏ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟିସିଜମ୍ ସିମିଲାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି ସୋ ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ monks. Which of the following was the major reason for the limited geographical spread of Jainism? Strong emphasis on monotheism, royal prohibition on monastic activity, rigorous ascetic practices unsuitable for large populations, lack of monastic literature. Answer number C. Rigorous ascetic practices unsuitable for large populations. Kind Jainism माने तांकर spread ता limited थिला geographically कहीं ना से माने बहुत rigorous asceticism practice करुथिले mass बहुत लोक तांको adopt करि पारु नथिले strictly से माने non violent थिले restricted strict non violence restricted agriculture थिला
ତାଙ୍କର ରିଲାଏନ୍ସ ଥିଲା ଅନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ସପୋର୍ଟ। ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମିଡଲ୍ ପାଥ୍ ଥିଲା, ସୋ ଦେ ସ୍ପ୍ରେଡେଡ୍ ୱାଇଡଲି ଆକ୍ରସ୍ ଏସିଆ। ଅନଲାଇକ୍ ଜୈନିଜମ୍ ଯିଏକି ମୋଷ୍ଟଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଯାକେ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିଗଲେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। The earliest Buddhist texts were composed primarily in Sanskrit, Prakrit or Pali, Tamil, Kannada. Answer of B. Prakrit or Pali. Earliest Buddhist canon ଯାହାକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବି କୁହାଯାଏ, they are composed in Pali or Prakrit. जो vernacular language ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ common ଲୋକ ତାକୁ access କରିପାରୁଥିଲେ। The vernacular languages accessible to common people. Pali tradition ସେଟା preserve ହେଇଥିଲା in Theravada Buddhism जो ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, म्यांमार and Thailand. संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट एमर्ज होइतला लेटर महायान डेवलपमेंट रु। बुद्ध से डेलिबरेटली अवॉइड करुथिले संस्कृत को, जोटा एसोसिएट होउथिला सेतबळे ब्राह्मणिकल एलिट्स मानक सहित, मेकिंग हिज टीचिंग्स मोर डेमोक्रेटिक। 36. Which of the following rulers played the most significant role in the global spread of Buddhism? Kanishka, Asoka, Bimbisara, Ajatasattu. आंसर हम बी अशोक। अशोक जे कि गोटे जड़े मौर्यन एम्परर थिले, से he played a greatest role in spreading Buddhism beyond India through state patronage and diplomatic missions. After Kalinga War, से बुद्धिज्म एम्ब्रेस करथिले and propagated Dhamma through rock and pillar edicts. Across South Asia. He dispatched Mahinda and Sanghamita to Sri Lanka, leading to establishment of the Theravada Buddhism in the island. Ashoka missions se send करुथिले to Central Asia, Southeast Asia. He used to send missions. ଯେମିତି କି Central Asia ହେଇଗଲା, Southeast Asia ହେଲା, West Asia and Hellenistic kingdoms. So it marked as an earliest example of state-sponsored religious diplomacy. In Jainism, the path to liberation places highest importance on devotional worship, ritual sacrifices, non-violence in thought, word and deed, performance of yajnas. Answer number C, non-violence in thought, word and deed. Very obvious from the options. जो central pillar थिला जैन स्पिरिचुअल practices रो, जोटा कि थिला अहिंसा, जोटा को हमें non-violence कहूछु, interpreted in the most absolute sense of non-harm in thought, word and deed. Jainism consider करुतला harming of any living being, even unintentionally भी जदि तांको harm तमे करूछ, as a cause of karmic bondage. कार्मिक बॉन्डेज मॉन्क्स प्रैक्टिसेस को यूज करुथिले, जोथरे कि से माने ग्राउंड को स्वीप करुथिले,
माउथ क्लथ्स वियर करथिले एंड स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म से प्रैक्टिस करुथिले टू अवॉइड द वायलेंस. लिबरेशन जहाँ मोक्ष कह जाए से पॉसिबल ओनली थ्रू टोटल प्यूरिफिकेशन ऑफ कर्म वाया नॉन वायलेंस सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड एसेटिसिज्म. डिवोशन रिचुअल बा सैक्रिफाइस जो रहिला दे डू नॉट लीड टू लिबरेशन इन जैन फिलोसॉफी ओनली एथिकल प्यूरिफिकेशन डज. Assertion reason Buddhism spread rapidly across Asia unlike Jainism. Reason Buddhism's flexible monastic structure and moderate ethical path were more adaptable than Jainism's extreme asceticism. पूरा ऊपर दीटा स्टेटमेंट देइथिला ऑप्शन रे मे बी से तारी ऊपर ही क्वेश्चन टा अछि. आंसर अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन रिपीट हे ऊपर ऑलरेडी एटा डिस्कस हे सरलाणी. आंसर अब ए. बुद्धिज्म एक्चुअली रैपिडली स्प्रेड करूथिला अनलाइक जैनिज्म काइना बुद्धिज्म रो जो प्रैक्टिस आसथिला से गुडी को फ्लेक्सिबल थिला. जस्टिस सूर्यकांत sworn in as the 53rd chief justice of India is associated with which of the following landmark cases? Sabrimala judgment, Pegasus surveillance case, triple talaq judgment, NJAC judgment. आंसर बी पेगासस सर्वेलेंस केस. जस्टिस सूर्यकांत जो अछंती सी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एबे 2025 रे हेचंदी वाज पार्ट ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस. सी पेगासस सर्वेलेंस केस रे नोटेबली पार्टिसिपेट करथिले जोथि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करथिला गोटे टेक्निकल कमिटी टू एग्जामिन द alleged यूज ऑफ स्पायरवेयर. ठीक अछि तांकर जो जुडिशियल रिकॉर्ड रही इट इंक्लूड्स केसेस ऑन आर्टिकल 370, governor and state relations, and civil liberties. Okay. Answer about Pegasus surveillance case. Saral seems recently launched by the government is related to digital tax filing for MSMEs, online river water quality monitoring, steel import registration, centralized defense procurement.
सरल सिम्स रो फुल फॉर्म कौन? स्टील सिम्स रो इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक अच्छे, एटा गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हेची टू स्ट्रीमलाइन एंड सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्टील इंपोर्ट्स। स्टील इंपोर्ट्स रो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रही ताकू केमिति स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई करा जिवो, एटा होची से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जायछि सेति कि इट एनहांसेस द ट्रांसपेरेंसी, reduce the compliance burden, supports better monitoring of import volumes। इंडिया जो एफर्ट अच्छी कि केमिति से तार ट्रेड प्रोसीजर्स को डिजिटाइज करिवो इन द नियर फ्यूचर आउ सेंसिटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रेगुलेट करिवो, ए पर्टिकुलर सिस्टम डा सरल सिम्स आ सहित अलाइन करूची। स्टील होची गोटे आमर स्ट्रेटेजिक कमोडिटी जोटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग ए सब जिनस लागुची, सो तार मॉनिटरिंग डा एसेंशियल। आंसर कौन हम? आंसर हम सी, स्टील इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन। India resumed tourist visas for nationals of which country after nearly 5 years? Japan, Myanmar, China, South Korea. आंसर हम सी, चाइना। इंडिया तांकर जो टूरिस्ट वीजा रही रिज्यूम करिछि फॉर चाइनीज नेशनल्स इन 2025। 5 वर्ष 5 वर्ष पर आफ्टर नियरली 5 years। तो एथिरु कौन जना पड़ुछि? पार्शियल डिप्लोमैटिक नॉर्मलाइजेशन। एंड ए जो डिसीजन टा इंडिकेट करूची कि पीपल टू पीपल एंगेजमेंट रे इंप्रूवमेंट देखा जाइची आउ बायलैटरल चैनल्स भी रिओपन होची धीरे धीरे। एंगेजमेंट रिओपनिंग। ओके, चाइना गोटे मेजर ग्लोबल सोर्स ऑफ टूरिस्ट एंड स्टूडेंट जोटा कि वीजा रिजम्पशन को स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस बनाए फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। Which Indian city hosted the 6th International Agronomy Congress in November 2025? Hyderabad, Mumbai, Bengaluru, New Delhi. आंसर अब डी, न्यू दिल्ली। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस जोड़ा कोठू को जाके केते डेट रु केते डेट जाके कंडक्ट हेतिला? नवेंबर 24 रु 26 जाए कंडक्ट हेतिला। होस्ट हेतिला न्यू दिल्ली रे, जोठी की बहुत गुडे ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी आसीतिले। से माने आसिकी डिस्कस करथिले ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग एंड एग्रीटेक इनोवेशन। इंडिया ए प्लेटफॉर्म को यूज करिकी तार
माने प्रोग्रेस जो से करूची प्रेसिशन फार्मिंग रे AI based crop monitoring and soil health initiatives सेठी showcase बा highlight करथिला this aligns with एंड ये जो इवेंट रहिला ये इंडिया रो जो एग्रो डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप अछि ग्लोबल साउथ रे ताकू एनहांस करूची क्वेश्चन नंबर 43 SBI projected GDP growth for second quarter 25-26 was around 5.8 6.2 7 7.5%. SBI कौन प्रोजेक्ट करछि आंसर हम 7.5%. ठीक अच्छी SBI इंडिया रो सेकेंड क्वार्टर जो रही 2025 to 26 GDP ग्रोथ 7.5% प्रोजेक्ट करिछि एंड एटा रिफ्लेक्ट करछि स्ट्रांग डोमेस्टिक कंजम्पशन देन इन्वेस्टमेंट रिवाइवल एक्सपोर्ट रेजिलियंस ठीक अच्छे despite global slowdown concern India one of the fastest growing major economies हिसाब रे प्रूव हेछि एंड एटा अलाइन होछि RBI जो ऑब्जर्व करछि ऑन रोबस्ट सर्विसेज सेक्टर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन संगरे so actually answer of 7.5%. Which regulatory body recently revised the threshold limits for related party transaction disclosures? RBI, CCI, SEBI, IRDAI. Answer is SEBI. Option number C. Securities and Exchange Board of India से ଏବେ recently revise କରିଛି जो threshold level ରହିଛି related party transaction ପାଇଁକି disclosures to improve transparency in what? In listed companies. RPT regulation जो रहिला it prevent misuse of corporate resources by promoters and ensure better governance. SEBI reforms एटा गोटे wide market strengthening initiative रो गोटे part जो थरे ESG norms भी include हुए faster settlement cycles भी थाए. So एठी question हिसाब रे हमर आंसर हबो SEBI. Which two beaches from Odisha retained the blue flag certification in 2025? Puri and Gopalpur, Sunapur and Chandrabhaga, Puri and Sunapur, Paradip and Chilika. आंसर हम सी पुरी एंड सुनापुर ओडिशार पुरी बीच और सुनापुर बीच से रिटेन कर प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2025 रे ब्लू फ्लैग कौन व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एटा गोटे इंटरनेशनल इको लेवल इंटरनेशनल इको लेबल जोटा कि क्लीनलीनेस सेफ्टी वाटर क्वालिटी और सस्टेनेबल टूरिज्म पाई कि दिया जाई थाए अवार्ड हुए इंडिया रे एबे लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस सेटा ग्रो करूची सो तार जो ग्लोबल कोस्टल टूरिज्म क्रेडेंशियल्स रही छी ताको फर्दर सेटा स्ट्रेंथन करूची क्वेश्चन नंबर 46 आमो हॉस्पिटल स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड इन ओडिशा एम्स एट building new district medical institutes, providing universal free medicine, modernizing public hospitals, upgrading medical colleges. Answer of C, modernizing the public hospitals. Amo hospital scheme eta gote 3388 crore
रुपीज इनिशिएटिव जोटा कि लागिबो टू मॉडर्नाइज ओडिसास पब्लिक हॉस्पिटल्स विथ अपग्रेडेड तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करा जिवो डायग्नोस्टिक डिजिटल रिकॉर्ड्स पेशेंट फैसिलिटी सब को अपग्रेड करा जिवो एटा ओडिसा रो गोटे ब्रॉडर हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स रो पार्ट लाइक बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना एंड इम्प्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज ए जो स्कीम टा रहिला से रूरल और अर्बन हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करूची डिलीवरी साइमल्टेनियस अर्बन हेल्थ केयर डिलीवरी को स्ट्रेंथन करूची साइमल्टेनियसली Odisha became the 12th state to classify which disease as notifiable: tuberculosis, rabies, Japanese encephalitis, scrub, typhus. Answer is B. Rabies. Odisha rabies को declare करची गोटे notifiable disease, becoming the 12th state in India to do so. एटा एनश्योर करूची कि केमिति मैंडेटरी रिपोर्टिंग हबो केसेस रो बेटर ट्रैकिंग हबो सर्वेलेंस हबो टाइमली पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स मिलिबो रेबीज टा एटी जो हमें डिजीज रो ना सुनुचे रेबीज एटा गोटे मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज public health challenge in India with high mortality and inadequate awareness. The Mukhyamantri Bhramyaman Prani Chikitsa Seva in Odisha is related to mobile rural food vans, mobile veterinary clinics, mobile anti-poaching teams, mobile dialysis units. As far as I remember, एक same टॉपिक उपरे प्रीवियस क्लास रे भी जेतोळे एमसीक्यू डिस्कशन हेइतिला फिफ्थ मॉक टेस्ट रो सिमिलर क्वेश्चन मु डिस्कस करथिली तो जो माने करंट अफेयर सहित अपडेटेड थिबे कि प्रीवियस क्लास अटेंड करिथिबे से मानको आंसर जाना थिबो आंसर अब बी मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स इथिरे केतेटा डिप्लॉय हेची 181 मोबाइल वेटरनरी vehicles deploy ହେଇଛି across ओडिशा and ए जो यूनिट गुड़ा रहिले 181 मोबाइल वेटरनरी ସେମାନେ कौन प्रोवाइड करिवे डोर स्टेप एनिमल हेल्थ केयर प्रोवाइड करिवे वैक्सीन भी देबे एनिमल मानको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी देबे इमरजेंसी सर्विसेज भी रूरल और ट्राइबल रीजन्स रे प्रोवाइड करिवे ओडिशा रो जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स रहिछि जहाँ भी सब स्कीम चालू छी रिगार्डिंग लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ता सहित ए जिंसटा अलाइन करूछि एंड एनहांसेस एनिमल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओके 49. Which of the following has been proposed for inclusion in the 8th schedule from Odisha? Ho, Bodo, Kui, Kuruk. आंसर अब कुई ओडिशार कैबिनेट से रेकमेंड कर कुई लैंग्वेज जोटा कि प्रीडोमिनेंटली को माने कुहंती कंध ट्राइब
ताको 8 शेड्यूल रे इनक्लूड करा जो कॉन्स्टिट्यूशन रो कुई गोटे मेजर ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा एंड तार जो रिकॉग्नाइज ताको करा गले इट वुड एनहांस द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज 8 शेड्यूल रे जदी ताको इंक्लूजन कर दिया जिवो सेटा तांकर जो डेवलपमेंट रही टेक्स्ट बुक एग्जाम ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन रे सेतरे डेवलपमेंट आसीबो सो आंसर हबो कुई लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन अंडर मिशन शक्ति लिंक्ड Amo Pokhari initiative. Odisha aims to convert ponds into pisciculture units, develop urban water bodies, create tourism circuits around the lakes, build new check dams. Answer about B. Develop urban water bodies. एटी पोखरी देइची देन एटी गोटे as it is ponds देइदेला जदि इनिशिएटिव जदि रिवाइज करि नथिबे जणा नथिबो ताहले जणे एटी लॉजिकल गेसिंग लगेयाकु जाय कि ऑप्शन नंबर 1 टिक करि के आसीबो सो जहाँ भी इनिशिएटिव रोची प्रोग्राम स्कीम्स स्पेशली देयर मिनिस्ट्रीज बहुत इंपोर्टेंट मगअप करिया सो एटा होची आंसर कोन बट डेवलप अर्बन वाटर बॉडीज आम पोखरी इनिशिएटिव जोटा कि मिशन शक्ति अंडर रे आसुची तार एम होची केमिति अर्बन वाटर बॉडीज जो रहिला ओडिसा रे ताकू रिवाइव ब्यूटीफाई और कंजर्व करा जिवो ए प्रोजेक्ट फोकस करे ऑन डीसिल्टिंग लैंडस्केपिंग creation of walkways and community maintenance. Community maintenance involving women SHGs and aku revitalize kale groundwater recharge improve haba urban ecology और local tourism भी improve haba. Okay, so that is it for today. Thank you for watching.